Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you again. We are studying chapter gravitation, and in this video we will study the difference between mass and weight. So let's recall the previous chapter that mass is the measure of inertia. Okay, and hence it's also known as inertial mass. Okay, and the mass of the body is defined as the quantity of matter contained in a body. So this mass is the quantity of matter contained in the body. Quantity of matter contained in the body. What does that mean? क्या मतलब है इसका? Quantity of matter contained in the body. यानी कि एक बॉडी में कितना मैटर है, कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, यानी कि उस बॉडी में कितना मैटर है. फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी. इस बॉडी में कितना मैटर है, कितने एटम्स हैं और कितने मॉलिक्यूल्स हैं. दिस इज द मैस. ये मैस है कि एक्चुअल मैटर कितना है इस बॉडी में. ओके, सो द मैस ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, एंड द ऐसा यूनिट ऑफ मास हम जानते हैं, दिस इज मेजर्ड इन केजी. ओके, मैस हम केजी में मेजर करते हैं, किलोग्राम. सो mass is a scalar quantity because it does not have any direction. इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. It has only magnitude. It has only magnitude. We call 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 8 kg, 10 kg. It does not have anything to do with direction. So this is a scalar quantity, and we measure the mass by beam balance or physical balance. Okay. The quantity of matter contained in the body remains the same whenever you go. For example, if you go on the moon, the matter will remain same in the body. The atoms and molecules will remain same in the body. If you are whether you are on the earth or whether you are on the moon or whether you are on the mountains, wherever you are, the matter in the body remains the same. And it is independent of surrounding. It is independent of position. Whatever you position, whatever you place the position of this object, the mass will remain same. It is independent of the surrounding. If it has the surrounding of moon or it has the surrounding of earth, it will not change. So this is a physical quantity, and this scalar quantity. Okay, and the mass of the body can never be zero. This is important. Okay, you cannot call that something as zero mass. It's not a valid statement. जब आपने matter को define किया, what do you say? You say that matter occupies space and has a mass. Okay, आप कभी नहीं कहते कि matter occupies space and has weight. No. तो matter, this mass can never be zero. ये कभी zero नहीं हो सकता. So as far as weight is concerned, we know that Earth attracts every object with a certain force, and this force depends upon the mass. Okay, we have studied it in the earlier classes that the force depends upon the mass. अगर किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उनमें ज्यादा होगा. ओके, and the acceleration due to gravity. Okay, it also depends on the acceleration due to gravity. We say that हमने ये पढ़ा है कि F is equal to mg. पढ़ा है हमने ये. Yes, F is equal to mg. Force is equal to mass multiplied by acceleration due to gravity.
So force depends on the mass and force depends on the acceleration due to gravity. So if mass is greater, the force is greater between the two objects, and if acceleration due to gravity is greater, the force is greater. Okay, and we also say that from the Newton's second law of motion हम क्या पढ़ते हैं? F is equal to m multiplied by a. This is the Newton's second law of motion. Weight is the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. Okay, I can say the force, weight is the force with which the object is attracted towards the earth. किस फोर्स से ऑब्जेक्ट जो है अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, दैट्स कॉल्ड वेट. Okay, that's called weight. And the force of attraction of the earth on an object is known as weight of the object. Okay, so we can call weight of the object as force of attraction of the earth on an object. For example, ये जो है यहाँ पे earth है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे. तो किस फोर्स से ये अर्थ जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, किस फोर्स से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड वेट. दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट. ठीक है ना, वो फोर्स, उस फोर्स को हम वेट कहते हैं. तो इस फोर्स की जगह हम वेट लेंगे. ठीक है ना, इस फोर्स की जगह हम वेट लेंगे. और फोर्स किस पे डिपेंड है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कितनी एक्सेलरेशन है इस ऑब्जेक्ट में, कितनी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, उस पर डिपेंड करेगा फोर्स, और जो है मास पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल, आप कोई स्टोन जो है थ्रो कर रहे हो, लेकिन वो स्टोन आप ग्रेटर फोर्स से थ्रो कर रहे हो, तो उसका वेट उस वक्त ज्यादा होगा. और दूसरा टाइम वही स्टोन आप स्मॉलर फोर्स से, यानी कि उस पर आप स्मॉलर फोर्स दे रहे हो, तो उस वक्त उसका जो वेट होगा वो कम होगा. क्योंकि जब आपने ग्रेटर फोर्स अप्लाई किया तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी. जब आप टुवर्ड्स अर्थ की तरफ इसको पुश कर रहे हो, और जब आप फोर्स जो है कम लगा रहे हो, तो उस टाइम उसका वेट उसका जो है वेट कम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी. तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? मास एंड फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसी तरीके से वेट भी इसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वेट फोर्स ही है. ठीक है ना, हमने कहा था कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, तो इस फोर्स की जगह हम वेट ले सकते हैं. सो वी कैन से दस दैट W weight, I call this weight is equal to m times g. वेट भी m times g के बराबर है. ठीक है ना, क्योंकि वेट भी किसी पे डिपेंड करेगा? मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेट. ये वेट है, W is equal to m g. एंड क्योंकि हमने इस फोर्स को वेट से जो है रिप्लेस किया, सो वी कैन से दैट SI unit of weight is also Newton. Okay, so this SI unit is Newton N. Another unit of weight called the gravitational unit of weight, that's called the gravitational unit of weight, is kilogram weight. Okay? Kilogram, it's called a kilogram weight. kgWt. Symbol is kgWt. Okay, kilogram weight.
तो 1 किलोग्राम वेट कितना होगा? किलोग्राम वेट, so 1 kilogram weight is that gravitational force. I can write it here. 1 kilogram weight, 1 kg weight, 1 kilogram weight is that gravitational force that acts on a body of mass 1 kg. Okay, for example, एक body है जिसका mass 1 kg है, तो 1 kg weight कितना होगा? The 1 kg weight is that gravitational force that acts on a body of mass 1 kg. Okay, 1 kg multiplied by 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Okay, अगर बॉडी का मास 1 kg है एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, then we can say that body has 1 kg weight. Okay, so this is equal to 9.8 into 1 kg into 1 kg and 1 meter per second square. So this is equal to 9.8. Okay, it's equal to 9.8. So I can say that 1 kg weight is equal to 9.8 Newton. Okay, this is 9.8 Newton. So 1 kg weight is equal to 9.8 Newton. So how is this weight measured? कैसे measure करते हैं हम weight? It's measured by spring balance. Spring balance एक जो है device है which measures the weight. अगर आपने spring balance नहीं देखी तो आप Google में स्प्रिंग बैलेंस जो है सर्च कीजिए और इमेज पे क्लिक करिए, तो वहां पे आपको स्प्रिंग बैलेंस मिल जाएगी. एंड द वेट ऑफ द फोर्स एक्ट्स इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, आप जो है अर्थ पे हो, ठीक है ना, यहाँ पे हम खड़े हैं, how can we measure this weight? We can measure this weight, for example, if this is earth, the force acting in the downward direction. Okay, force acting in the downward direction. So downward direction क्या होगी? यहाँ पे हम सेंटर ऑफ द अर्थ से ग्रेविटी को मेजर करते हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ. तो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जो है हमारी अट्रैक्शन हो रही है. सो द अर्थ अट्रैक्ट्स अस इन द center of the earth, towards the center of the earth. So for example, let's say that आपका mass जो है this is 63.5 kg, ये आपका mass है 63.5 kg. आपका weight जो होगा, weight is equal to F times m times g. So this is equal to mass 63.5 multiplied with g is 9.8. So this is approximately equal to 623 Newton. तो यहाँ पे आपको अर्थ जो है 623 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द सेंटर. Okay, and if we measure this weight on मून, तो अगर मून पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन जो है मून पे है, दिस इज मून, और इसका जो मैस है इतना ही है, ठीक है ना, मैस इतना ही है, मैस इज 63.5 kg एंड व्हाट्स मैस इज मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी. सो वेट विल बी इक्वल टू, वेट किसके बराबर होगा? हमने पढ़ रखा है कि फोर्स ऑन द मून और अट्रैक्शन ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स अट्रैक्शन ऑन द अर्थ. जितनी अर्थ पे अट्रैक्शन है मून पे जो है 1/6 ऑफ दैट मून पे अट्रैक्शन है. सो वी कैन डिवाइड दिस 623 by 6. सो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है दैट इज 103
न्यूटन, 103 न्यूटन। तो मून पे 103 न्यूटन हमारे ऊपर जो है फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे 623 न्यूटन एक्ट कर रहा है अगर आप 63.55 kg है। So this is given by weight is given by as I already said that W is equal to m times g, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, ठीक है ना, इट विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसी तरीके से वेट भी चेंज होगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट विल आल्सो चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, so in the interplanar spaces and at the center of the earth where g is 0, okay, in the space g is 0 and at the center of the earth g is also 0, so this weight will also become 0. What does this mean, that weight will also become 0? This means that we will experience zero gravitation. There will be no gravitation, so we will experience true weightlessness. Let's discuss about this weightlessness. What is meant by weightlessness? Here I forgot to mention that this weight is a scalar quantity, because it has got direction also as well as magnitude. So it's a scalar quantity. Okay. So we were talking about weightlessness. What is meant by weightlessness? So we said that when this W becomes 0, that is weight becomes 0, we will experience weightlessness. Suppose a body is placed in a lift. For example, this is a lift. Consider this as to be a lift, and a body is placed in this lift. The weighing machine will show that the weight of the body. Okay, if the lift is made to fall freely, if we fall this lift, or if we make this lift to fall freely due to gravity, both the weighing machine and the body will fall with the same acceleration. Okay, if there is here is a weighing machine. Firstly, the weighing machine will show the weight of this object. But if we made this system, this whole system, the man sitting in this lift, if we made this to fall freely, this machine will not measure the weight of this person, and this man and this machine or this lift will fall with the same acceleration, and the body in this state will not press the weighing machine. Okay, the body will not press the weighing machine with any force, and hence shows zero weight. Thus the body is weightlessness during the free fall. So if it is a free fall, the weighing machine here will not show any weight, because this lift and this man is are falling with the same acceleration. So this person will experience a weightlessness. So we can say that weightlessness is a state when an object is falling freely. When an object is falling freely under the action of gravity. So if the object is falling freely, that object will experience weightlessness. So weight of an object on the moon. मून पे कितना वेट होगा? हमने पहले ही कहा कि मून पे जो है 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ होगा,
Okay, let's now calculate it mathematically. हम इसको mathematically calculate करते हैं कि कैसे ये 1/6 होता है. तो हमें पता है कि for example let the m be the mass of the earth. ठीक है ना, m हम mass of the earth लेते हैं, mass of the earth. Okay, mass of the earth. पहले हम मून का कैलकुलेट करते हैं. सो लेट इट बी mass of the moon. Okay, so m is the mass of the moon and small m is the mass of the object. जिस पे हम ये जो फोर्स है या वेट है कैलकुलेट करेंगे. ओके, एंड लेट r be the radius of the earth, this moon, sorry, radius of moon. बिकॉज हम सेंटर से इस ग्रेविटी को मेजर करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे r ले लिया, रेडियस ऑफ द मून. तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है, F इज इक्वल टू G M M1 M2. यहाँ पे M1 क्या है, M1 दिस mass of the object, so I write it M. M2 क्या है, mass of the moon, so I write it as M, capital M. Okay, divided by r square. So here it is radius square. So this is force. So this force is gravity, this weight. ठीक है ना, तो हम इस फोर्स को जो है वेट से रिप्लेस करते हैं. सो वेट ऑन द मून, I call it subscript WM. W subscript M is equal to G M M divided by R square. Let me call this equation first. So, and if we consider that this weight of the same object on the earth is WE. For example, if this is WE, weight of the same this object on earth. Okay, so this is WE. So WE is the weight of the same object on the earth. But here is the question that this earth has not mass equal to mass of the moon. We know that this m is not equal to m. Mass of the moon is not equal to mass of the earth. We know that mass of the earth is 100 times, approximately 100 times equal to mass of the moon. So we can write it as mass of the earth is equal to 100 times m. 100 times m. M here is mass of the moon. Okay, and radius भी same नहीं है. Radius of the earth, radius of the earth is 4 times r. R here is radius of moon. This is 4 times r. So radius of earth is 4 times radius of the moon. Okay, so I can write WE as GM. G तो हर जगह सेम है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड M भी सेम होगा. ठीक है ना, ये मैस है क्योंकि ये जो मैस है सेम होगा, लेकिन ये जो मैस है ये सेम नहीं होगा. So this mass on the weight on the earth will be mass of the earth is 100 times moon. So I can write it as here 100 times moon. Okay, and radius is 4 times r. 4 times radius of the moon. So this is 4r square. This is equal to 100 multiplied by GM M divided by 16 r square. 16 r square. So this is equation second. So from equation first and from equation second, if we compare these two and if we divide equation second by equation first by equation second,
we will get here as, so dividing equation first by second, we will get Wm, weight on the moon, divided by We, weight on the earth, is equal to, look here, if we divide this equation by this G and this G will get cancelled, this M and this M will get cancelled, and this capital M and this capital M will get cancelled, and this R square and this R square will get cancelled. Everything will get cancelled except this 16 and 100, and the 16 will go up like this. For example, if I divide G M divided by R square, I had divided it with 100 multiplied by Gm M divided by 16 R square. So this R square and R square will cancel, the GMM and GMM will get cancelled, and here यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है ना, यहाँ पे 1 बचा. So this is 1 divided by 100 divided by 16. तो ये 16 जो है ऊपर आएगा. This is 16 by 100. So 16 by 100 is approximately equal to 1 by 6. 1 by 6, and here Wm divided by We is equal to 1 by 6. यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. So this, और Wm किसके बराबर है, Wm यहाँ पे We, or we can say 1 by 6th of We, approximately. So weight on the moon is equal to 1 by 6th of weight on the earth. Okay, weight on the moon is equal to 1 by 6th of weight on the earth.